हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014 कल प्रीलिम एग्जाम हुआ और उसमें ये इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी दो पोर्शन जो है इसका हम लोग जा रहे हैं डिटेल एनालिसिस करने। तो आपको ये जान के और जैसा कि आपने पेपर भी देखा होगा तो उसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो 21 नंबर्स मतलब 21 क्वेश्चन जो है टोटल आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इन 21 में आप देखेंगे तो अधिकांश क्वेश्चन जो है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है उससे क्वेश्चन पूछे और काफी फैक्चुअल क्वेश्चन जो है इस बार पॉलिटी के रहे हैं। और क्वेश्चंस अगर आपका बेसिक्स और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर रहा हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से ये बन गए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कि विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोक सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स while any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration। तो लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल या इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका 96 और इसका जो क्लॉज 2 है और इसके विषय में आर्टिकल 100। ये क्वेश्चन जो है इन दो आर्टिकल का एक कॉम्बिनेशन इसको आप कह लीजिए। तो इसमें जो स्टेटमेंट है कि ही शैल नॉट प्रिसाइड, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। जो स्पीकर होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस ऑफ द पीपल का, लोकसभा का, और चेयरमैन जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा के। तो लोकसभा का स्पीकर जो है जब उनके अगेंस्ट में कोई रिमूवल प्रोसेस जब चल रहा हो तो वो क्या होते हैं, वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ये स्टेटमेंट जो है आपका एक गलत स्टेटमेंट, क्योंकि उनको बोलने का अधिकार होता है, उस प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 100 में दिया हुआ। तो इसमें ये जो दिया गया है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में जब उनके अगेंस्ट में जब ये रिमूवल प्रोसेस चल रहा हो तभी, लेकिन जब नॉर्मल ज्वाइंट सिटिंग अगर चल रही हो, ज्वाइंट सिटिंग, और ज्वाइंट सिटिंग में अगर प्रिजाइड कर रहे हो स्पीकर, प्रोसेस अगर रिमूवल का ना हो तो उसमें इक्वलिटी ऑफ जब वोट होता है, इक्वलिटी ऑफ वोट्स, तो कास्टिंग वोट वो स्पीकर का हो। लेकिन इस केस में क्योंकि रिमूवल उनके अगेंस्ट में चल रहा है तो रिमूवल प्रोसेस में फर्स्ट इंस्टेंस में उनका जो है ये जो स्टेटमेंट है कि ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। तो ये आर्टिकल 100 का स्टेटमेंट हो गया और ये 96 क्लॉज 2 से आपका, ये तो दो आर्टिकल का ये क्या है, ये मिक्सचर आप इसमें इस क्वेश्चन में ये देखिए। तो जो आपका आंसर होता है वो वन ओनली हो गया, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ वोट्स और कास्टिंग वोट्स जो है उसमें ये तब करते हैं जब कोई ज्वाइंट सिटिंग हो और स्पीकर प्रिजाइड कर रहे हो। यहाँ स्पीकर के अगेंस्ट में जो है वो रिमूवल प्रोसेस है, ऐसे रिजोल्यूशन में वो प्रिजाइड नहीं करेंगे स्पीकर। और यही जो है डिप्टी स्पीकर के भी केस में है। इसके साथ साथ जो इनको हटाने का प्रावधान होता है वो एक इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब हो गया कि ऑल द देन मेंबर्स जो होते हैं, तो जितने तत्कालीन मेंबर्स हैं मतलब उसमें वैकेंसीज को हटा के और उसके बाद से इनके अगेंस्ट जो है ये रेजोल्यूशन ये पास किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 54, with the reference to the Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. Next, a bill passed by the Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha.
And the third one is a bill in regard to which the President of India notified his or her intention summon the House to a joint sitting lapses on the resolution of the Lok Sabha. इसमें जब आप देखेंगे कि ये बिल पेंडिंग इन लोकसभा lapses on its resolution, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट, इज अ राइट स्टेटमेंट. A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. Again, this is a right statement. So 1 and 2, these are the right statement. This is it. Next one. With the reference to the statement, with the reference to the Parliament of India, consider the following statement. Prorogation of a house by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers. Prorogation of a house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India prorogating the house within session. Dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who save in exceptional circumstances, that's so on the advice of the Council of Ministers. Now, there are three terms under Article 85 of the Constitution: prorogation, and dissolution. There are three sessions: budget session, monsoon session, and winter session. Prorogation means temporary suspension. Temporary suspension. Under Article 85 of the Constitution, it is the President of India who can prorogue either houses of the Parliament. Either houses of the Parliament. Either houses of the Parliament means including Rajya Sabha, Rajya Sabha can be prorogued also, but it cannot be dissolved. Dissolution means that by definition Rajya Sabha is not dissolved. But yes, Rajya Sabha can be prorogued. Prorogued means there is a temporary suspension, whereas dissolution means that it is finally dissolved. So the prorogation of a house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India prorogating the house which is in the session. This statement is the right statement. Dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who save in exceptional circumstances does so on the advice of the Council of Ministers. Again, this statement is a right statement under Article 85 of the Constitution. Whereas statement 1, that prorogation of a house by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers, this statement is a wrong statement. Wrong statement in sense that the President of India hardly take any decision on its own. So President of India, on the ad and advice of the Council of Ministers, can prorogue. So prorogation of the house by the President of India does not. So the answer will be answer 2 and 3. Here one thing is very important.
maybe you will be encountering such kind of questions in upcoming years or in other examination also, that even Rajya Sabha can be prorogued, but Rajya Sabha cannot dissolve, because by definition it is a permanent house. Prorogation means temporary suspension, whereas dissolution means dissolve. Now the next one. Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Consider the following statements regarding this. Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha. This statement is a wrong statement, because it is mentioned that in 2026 census will be a reference for it. The second statement is that this will be in force of 15 years after becoming an act. Yes, this is the right statement. There are provisions for reservation of seats of scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. Again, this third statement is also a right one. So the answer will be the in this question 2 and 3. Next, a writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Court too. So first we have to understand that what is a writ. So writ writ or written order under Article 32 of the Constitution and Article 226 of the Constitution, it it provides certain writ to Supreme Court of India that the Supreme Court of India can issue in the form of a direction or order 5 writs in the name after habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition एंड को वारंटो। और यही 5 रिट जो है आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है वो इशू कर, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ये रिट्स इशू किए जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे ही हैज right to move to go to Supreme Court under Article 32, which itself is a fundamental right, and Supreme Court has direct or order certain this written order in the forms of habeas corpus, mandamus, certiorari, and prohibition. Whereas in this prohibition, a writ of prohibition, that the name suggests to prohibit, to prohibit. So while in a proceeding, in continuation of proceedings in a case, so it is a writ of prohibition is issued to a lower court prohibiting continuation in a proceedings in a case. So this is the right answer. Whereas in certiorari, what happens that it is like to quash, ऑर्डर जो है उसको क्वैश करना हो तो सर्टियोररी जो है वो इश्यू होता है। और प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जब वो प्रोसीडिंग के फॉर्म में होता है तो ये इश्यू करते हैं। इसका जो आंसर हो गया आपका ये सी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Consider the following statement. It is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe. Second statement. A community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state. Again, the first statement is it is not that the governor decides. So this statement is a wrong one. Whereas second statement, a community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state. So this statement is a right statement. So answer will be 64 2. Next one. 65. Again, with reference to union budget, consider the following statements. The union finance minister on behalf of the prime minister lays the annual financial statement before both the houses of parliament. At the union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the president. Again, the union finance minister on the behalf of the president. This is a wrong statement. Under Article 112, annual financial statement, annual financial statement is mentioned. The word budget itself is not there in the constitution. Whereas the union finance minister, not on the behalf of the prime minister, but yes, on behalf of the president, because he is an executive head and constitutional head of the state. So this is not the right statement. Whereas second statement, at the union level, no demand for grant can be made except on the recommendation of the president. This is the right statement. The answer will be next one. Who of the following is the author of the books The India Way and Why Bharat Matters? So again, this is a question of current affairs, and it is a very famous book. Last year it has been in news. So the author is S. Jayasankar, Subramaniam Jayasankar, and he is an S. Jayasankar is a Minister of External Affairs. Next one. 22. With the reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. So it provided for establishment of an All India Federation based on union of the British Indian provinces and princely states. The second statement is defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature. Again, the second statement is wrong. But the first statement, that yes, All India Federation, this concept has been taken from Government of India Act 1935. So again, option 1 is the right answer. Next one. 76. As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of. Again, this question. Under Article 368, it gives Parliament
constituent power. Parliament or union legislature has two types of power. One is constituent power, the second one is legislative power. The Constitution of India under Article 368 grants Parliament that it has a constituent power, and while using its constituent power, it is the Parliament of India can amend any part of the Constitution subject to basic structure, and this amendment and this provision of the Constitution by the way of addition, yes, by the way of variation, yes, and by way of repeal. Because already we have seen that there are so many articles has been repealed from the Constitution, like right to property has been repealed from fundamental rights. Addition, like there are certain words in preamble which has been inserted. So in addition also the variation is there. So the answer is 1, 2, and 3. So D option is the right. Next one. 78. Which of the following statements are correct in respect to money bill of the parliament? So money bill of the parliament, there is a special procedure in respect of money bills. First of all, a money bill, the definition of money bill is given under Article 110. In that, it has been mentioned that imposition, abolition, imposition, remission, regulation or regulating, alteration of any tax is a money bill. And the final say of a bill, that whether it is a money bill or not, it belongs to the Speaker of the House of the People. लोकसभा का स्पीकर जो है उसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है ये बताने के लिए कि कोई बिल मनी बिल है अथवा। दूसरी बात कि कोई भी फिनेंशियल मैटर्स पे राज्यसभा को या काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कोई अधिकार जो है उस पर नहीं होता है। तो ये एक फैक्चुअल चीज है कि आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल के विषय में ये दिया गया। दिस स्टेटमेंट इज द राइट। A money bill shall not be introduced in the council of the state. Again, this is a right statement. The Rajya Sabha can either approve or the bill or suggest changes but cannot reject it. Again, this is the right statement. So based on 1, 2, and 3, we can say that this is the answer. But the last one, amendments to a money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. This is a contradiction of the statement 3. Rajya Sabha doesn't enjoy any kind of power in respect to financial matter, especially money bill. And there is a one more thing is that money bill, all money bills are financial bills. But all financial bills are not money bills, because just now we have seen that in a money bill, it is the speaker who has the final say or final authority that whether a bill is a money bill or not. And the imposition, abolition, remission, regulation, and alteration of any taxes, but only these things, abolition, imposition, remission, regulation, and alteration, it doesn't qualify or it doesn't say that a bill has to be a money bill. So it is the speaker of the house who will
authorize that whether a bill is a money bill. Next one. The Northeastern Council was established by Northeastern Council Act 1971, subsequent to the amendment of NEC Act in 2002. The council comprises which of the following members? So this is a question regarding, first of all, there were a zonal council. And there are 5 zonal council were there. So the governor of constituent states. So in Northeastern Council, when it was established in the Act 1971 NEC, so it was there was the provision that governor of that particular or constituent state has to be a member of one of the council, and the second one is the chief minister of the respective state. Again, this is a right statement. The third one is that 3 members nominated by the President of India and of course the Home Minister of India. So the final answer is D option. This is the right answer. Next one. How many delimitation commissions have been constituted by the government of India till December 2023? So again, the last delimitation was in 2002. Prior to that, there were 3 more delimitations commission has been came into picture. So the right answer is 4. The Constitution in 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the Constitution to include which of the following languages? So Mathili was included a very late. So Konkani, Manipuri and Nepali. Konkani, Manipuri and Nepali. These are the Mathili was not. 93rd. Again, this is a very, it's a factual question and it has hardly do with any conceptual clarity. So it was mentioned that Bharatiya Jan Sangh. So who was the leader? So Bharatiya Jan Sangh. So Dr. Syama Prasad Mukherjee. This is the right one. Congress for Democracy, again Jagjeevan Ram. He was a member of that party. Socialist Party. Acharya Narendra Dev was a part of Socialist Party and Swatantrata Party C. Rajagopalachari. So the answer is that only 2 is pairs. This one, Congress for Democracy and Bharatiya Janata Sangh. These 2 were the right options. '94. Powers of municipalities are given in Part 9A of the Constitution. Yes, this is a right statement in the Article 243W. Emergency provisions are given in Part 18 of the Constitution. Yes, this is a right statement. And emergency provisions we have taken from Weimar Constitution of Germany. Third one, provisions related to amendment of Constitution are given in Part 20. Yes, this is a right statement under Article 368. And in this part, only one article is there. So the answer is 1, 2, and 3. Next, which one of the following statements is correct as per the Constitution of India? Interstate trade and commerce is a state
subject under the state list. No, this is a wrong state. Interstate migration is a state subject under the state list. It cannot be possible. Interstate quarantine is a union subject under union list. Corporation tax is a state subject under state list. This is a wrong one. So right answer is C option. So right option is interstate quarantine is a union subject under union list. Under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? अब इसके विषय में आप लोग देखें कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये जस्टिस के पुट्टास्वामी केस है, जिसमें ये बताया गया था कि राइट टू प्राइवेसी या निजता का जो अधिकार है वह व्यक्ति के जीवन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, इसके अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये जो है ये प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक्ट जो है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत जो है ये क्या है एक राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन. तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल liberty, that no person shall deprived of his life or personal liberty except in accordance with the procedure established by law. आर्टिकल 15 जो है ये क्या बताता है, तो ये प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रिलीजन रेस कास्ट जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ इसके ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. आर्टिकल 16 जो है ये बताता है आपको कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी स्तर पे कोई भेदभाव कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं बनना चाहिए, न रिलीजन रेस कास्ट जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ डिसेंट और रेसिडेंस के ग्राउंड पे. आर्टिकल 19 जो है ये बताता है आपको कि ऑल एवरी सिटीजन हैज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, whereas article 21 is the right answer. The last one, which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? ये काफी चर्चा में ये रहा एथिक्स कमेटी पिछले एक साल में आप देखे होंगे न्यूज में भी. Initially it was an ad hoc committee. Yes, it was an ad hoc committee when GM Bal Yogi was a speaker of the Lok Sabha. In that time it was an ad hoc committee. It was constituted in 1996. After that, in 2015, it has become a permanent committee. Only a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha. This is a wrong statement. Why wrong statement? Because only a member, anyone can uh, make a complaint relating to, but approved by a member of parliament. This committee cannot take up any matter which is a sub judice. Yes, this statement is the right one. So 1 and 3. So answer is. तो आप देखे होंगे कि काफी ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल एक मिनिमम कॉन्सेप्ट जो है ये, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लगभग सारे मतलब आउट ऑफ दिस 2021 क्वेश्चन जो हैं इनमें से हम लोगों ने 17 to 18 जो हमने क्लासरूम में अपने ये प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं उसमें फाउंडेशन कोर्स में हम लोगों ने इसको कर रखा है. काफी इजी क्वेश्चन जो होगा ये पॉलिटी के लिए. नेक्स्ट अब next economy. Now coming to economy's question. The total fertility rate in an economy is defined as. अब इसमें है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो कैसे डिफाइंड होता है, तो फर्टिलिटी रेट जो है वो डिफाइंड होता है द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ए वुमन वुड हैव by the end of her childbearing age. Yes, this is a right statement. Next one. Consider the following statement. In India,
Non-banking financial companies can access liquidity adjustment window of the Reserve Bank of India. In India, foreign institutional investors can hold the government securities. In India, stock exchanges can offer separate trading platforms for debts. So in that, you can see that इसमें आप देखें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है LAF के अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो, ये एक तरह का रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट मींस दैट आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये कोई वस्तु है और इसको हमने दिया किसी को कि भाई साहब इसको रखिए और जब जरूरत होगी तो हम इसको फिर से हम आपसे ये खरीद लेंगे। तो ये LAF है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, जिसमें सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, वो बैंकों को लोन देती है और जब इंजेक्ट करना होता है उसको लिक्विडिटी तो वो रेपो रेट पे, और जब एब्जॉर्ब करना होता है लिक्विडिटी तो वो रिवर्स रेपो पे वो क्या करती है कि वो उसको एब्जॉर्ब करती है। तो अब लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये एनबीएफसी को ये नहीं है, लेकिन एफआईआईज जो है इनको ये अलाउ किया जाता है कि हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो सर्टेन एक्सटेंट जो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डेट्स के लिए प्लेटफॉर्म जो है ये एक सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यस, ये भी स्टेटमेंट ये सही है। तो ये ऑप्शंस 2 और 3 जो डी है ये आपका राइट ऑप्शन। थर्ड वन, in India, which of the following can trade in corporate bonds and government securities? इंश्योरेंस कंपनीज हाँ ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पेंशन फंड्स ये भी करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स ये तो करते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, इसमें से फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये समझा जाए कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता क्या है। तो ये एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज जैसे है और इसमें क्या है, इनका भी एक ट्रेड होता है आपका ये मार्केट्स में, जैसे कि आपका ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसमें एक सिक्योरिटीज का एक जैसे कि ग्रुप, जैसे कि PSUs ETF कह लिए, तो जितने पब्लिक सेक्टर जो है यूनिट हो गए इनका क्या हो गया, एक ETF हमने ये बना दिया और इसका एक ट्रेड जो है ये हम लोग करते हैं एक्सचेंज में। तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जैसे NSE हो गई या BSE हो गई, उस पे क्या है ETF में ये जो है, और काफी इधर रिसेंट पास में ये काफी पॉपुलर और एक बहुत अच्छा ये एक निवेश का जरिया है ETF। मोटर व्हीकल्स ये कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। करेंसी स्वैप, हाँ ये करेंसी स्वैप निश्चित तौर पे ये एक तरह से इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव जिसको कहते हैं कि जिसका अंडरलाइन जो है वो वैल्यू जो है एक एसेट्स पे वो डिपेंड करता है ना। तो अब इसमें जैसे कि ये करेंसी स्वैप में जैसे एक दो डिफरेंट डिफरेंट आपके करेंसी हो गए, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई डॉलर है और दूसरा जो है थाईलैंड का थाई बाट, इन दोनों के बीच में कोई स्प्रेड, या फिर ऐसे समझा जाए कि इंटरेस्ट रेट में कोई स्वैप हो गया तो उसके स्प्रेड को, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो 1 और 3 जो है मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑप्शन ये फर्स्ट और करेंसी स्वैप ये आपके फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मोटर व्हीकल जैसा कि नाम ही वो बताया, तो इसलिए आंसर जो हो गया इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ये काफी जो है ये क्वेश्चन जो है जैसे कि इसमें क्या करना है कि इसमें बता रहा है कि ये कौन कौन से पेयर्स जो हैं ये सही जो है वो मैच किए। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अब इसमें है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये टर्शियरी जो है ये नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है।
डेयरी फार्म जो है वो प्राइमरी, और वेविंग क्लॉथ जो है आपका ये सेकेंडरी है। तो अब इसमें, और एग्रीकल्चर जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि वो एक प्रिमिटिव एक्टिविटी होती है, तो इसमें जो आंसर हो गया आपका ओनली 2। नेक्स्ट वन, again with reference to physical capital in Indian economy consider the following पेयर। अब इसमें ये बताता है कि फार्मर्स प्लॉ क्या वो वर्किंग कैपिटल है, कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट्स है, यार्न यूज्ड और वेबर फिक्स्ड एसेट्स है, पेट्रोल वर्किंग। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है पहले इसको समझा जाए। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया कि करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज, अगर आपका इन दोनों का ये डिफरेंस, या आप ऐसे समझिए कि कोई अगर आप व्यवसाय चला रहे हैं तो उसको चलाने के लिए एक जो आपका ऑपरेटिंग जो कैपिटल चाहिए उसको, तो जैसे कि पेट्रोल, अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपकी, ऑटोमोबाइल की, उसके लिए पेट्रोल आपके लिए क्या हो जाएगा, एक वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, और कंप्यूटर तो एक फिक्स्ड एसेट्स के रूप। तो 2 and 4, so the answer will be only 2. Next one, with reference to the rules imposed by RBI while treating foreign banks, consider the following statements. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. No, this statement is a wrong statement. The second one, for wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian national. Yes, this is a right statement. So only 2 is the answer. And for that, at least 500 crore or 5 billion is required for the capital. So minimum capital for, so no minimum, no, there is a minimum capital at least 500 crore or 5 billion. So answer is option B. With reference to corporate social responsibility rules in India, consider the following statement. CSR rules specify the expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. Yeah, this is a right statement. The second one, CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. So this statement is a wrong statement. So answer is only. Next one. Which one of the following is 100 million farmers? Description about 100 million farmers. So it is a platform for accelerating the transition towards food and water systems that are net zero carbon nature positive. The second statement, it is an international alliance and a network of individuals and farming organizations interested in supporting and strengthening the development of an organic animal husbandry. It is a digital platform fully integrated with the service providers and built on the blockchain at the base. It is a platform with the mission. So the statement one, it is a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero carbon nature positive and that aims to increase farmer resilience. This is the right step. Option A is the right answer. Next one. Consider the following statements in respect of digital rupee. First one. It is a sovereign currency issued by the RBI in alignment with its monetary policy. Yes, this statement is a right statement.
Second one, it appears as a liability on the RBI's balance sheet. Any currency printed by RBI, it is a liability on its balance sheet side. Third one, it is insured against inflation by its design. Absolutely not, because inflation, whenever there is an increment in money supply or increase in money supply, it will lead to an inflation. So statement 3 is a wrong statement. And if statement 3 is a wrong statement, then finally it is a freely convertible against commercial bank money and cash. This is a right statement. You can easily convertible digital currency into cash and commercial. So the answer will be 1, 2, and 4. Next one. So that is how we are going to conclude this session. तो इसमें जो लास्ट जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये रहा कि क्वेश्चंस जो इकोनॉमी के हैं वो क्वेश्चन जो हैं बैंकिंग और फिनांस से ज्यादा रह गए और जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं रिलेटिवली इजी हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे और बेसिक्स क्वेश्चन थे. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इवन आप क्लास नोट्स भी और क्लासरूम प्रोग्राम भी आप अगर अटेंड किए होंगे तो इसको बहुत आसानी से ये कर लेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.